Assalamu alaikum Sri class. As you know, we have started lesson number 6, the ugly duckling, and we have completed lesson question number A. We have solved question number A, B, C, D, E, F till here. Now we will start the next question, opposite words. Question number G, find the opposites of the following words in the grid. This is the grid, so we will find the opposites of these words. Number 1 पे है pretty, so we will find from here. The answer is, you can see here, ugly. This clear? The next is nearby, so here you will write ugly. Clear? So next is too large. Large का opposite क्या होगा? Small, so we will write small. Here you can see SMALL, small, so circle it. In this way you will complete this activity, okay? Remaining do it by yourself. Analogies. Okay, what is analogies? An analogy is made up of two pair of words that have a similar relationship. Example, duckling is to duck as chick is to hen. Clear? So question number H है, complete each analogy but by writing the correct word. Sun is to day and moon is to night. So here we will write night. Clear? Feathers is to bird as fins is to fish. Eyes is to see as nose is to smell. इसे कहते हैं रिलेशनशिप, यानी कि नोज़ का स्मेल से ताल्लुक है, स्मेल का नोज़ से ताल्लुक है. ब्रश इज़ टू पेंट एज पेंसिल इज़ टू राइट, और पेंसिल लिखने के लिए होती है. डजन इज़ टू 12 एज कपल इज़ टू 2. 3 इज़ टू ट्रायंगल एज 4 इज़ टू स्क्वायर. सो हियर वी राइट स्क्वायर. क्लियर? टर्न योर पेज. नाउ स्टूडेंट, देयर इज़ अ ग्रामर पोर्शन, simple present tense. So simple present tense, read the following sentences. The duck family lives near a lake. Why there is a lives? The hen pecks at the ugly ducklings. So students, check, the underlined words are action words. These are also called verbs. इनको हम verb भी कहते हैं. Live, peck. In the above sentences, lives and peck refer to action. ये action show कर रहे हैं done in the present, जो present में ही हुआ. The verb lives and peck are therefore in the present tense. इसीलिए ये present tense है. The forms of the verb depend upon the person and number in the sentence. Form of verb depend करती हैं person के मुताबिक, यानी कि if पर्सन जो सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है, इफ़ सिंगुलर, सो वी विल एड एस और ई एस और आई ई एस. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ई एस और आई ई एस. हेयर यू कैन सी पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. फर्स्ट पर्सन आई गो, आई प्ले. वी गो, आई वी. फर्स्ट पर्सन क्या है? I will. Second person you. You go, you play, you go, you play. Clear? Third person, he goes, she goes, he plays, she plays, it goes, they go, they play, and they go. If the third person is singular, so we will use se. If the third person is singular, so with that verb we will add ses or ies. Clear? So students, क्वेश्चन नंबर आई देखें. फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स. माहम डैश ड्रिंक वाटर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रैकेट वर्ड वी विल सॉल्व दिस. यू कैन सी हियर maham is a singular person, so with the singular person we will add s or es with the form of verb. So here I am going to write drinks. Why I have written here drinks? Because there is a maham is singular. Next is the ducklings dash swim in the pond. Now you can see that ducklings ये ज़्यादा हैं. So if the subject is plural we will not add s or es, just we will write first form swim. Clear? Now you check Vicky never. Now Vicky is a name and that is a singular person.
So Vicky never tells a lie. Here we will write S, because we will add S because Vicky is a singular subject. Tells a lie. A monkey, and you can say that monkey is also singular. Monkey, here we will add S or yes, so monkey eats bananas. Clear? So the boys are plural subject, so boys are plural. Here we will not add S or yes, just we will write play. Play, cheese, chess, sorry. So 6, we is a plural, so we will not add S or yes, just we will write visit. We visit our grandparents every year. Clear? We have completed this activity. Now next is am are. Some verbs do not show action. कुछ वर्ब जो हमें एक्शन शो नहीं करते, बट टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग इज, लेकिन हमें बताते हैं कि व्हाट समवन और समथिंग इज, और क्या चीज़ है कहाँ पे है. सो व्हेन वी यूज़ इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन, जब हम किसी चीज़ के पर्सन के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में बात करते हैं, एनिमल के बारे में बात करते हैं, थिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं इज़. द डकलिंग इज़ अगली. यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, जस्ट हम बता रहे हैं उसके बारे में. क्लियर? वी यूज़ एम ओनली विद आई. हम जस्ट एम को जस्ट हम आई के साथ यूज़ करते हैं, जस्ट विद आई. क्लियर? एग्जाम्पल है आई एम द किंग ऑफ द जंगल. मैं जंगल का बादशाह हूँ. सो वी यूज़ आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब हम एक से ज़्यादा शख्स की, जगह की, एनिमल की और चीज़ों की बात करें तो हम क्या यूज़ करेंगे आर. आर इज़ आल्सो यूज विद यू. यू के साथ भी आर यूज़ होता है. यू आर लेट फॉर द क्लास, बॉयज़ आर प्लेइंग. क्लियर स्टूडेंट्स? चेक द क्वेश्चन नंबर J. Fill in the blanks with is, am or are. So students, do this activity by yourself. It's really easy. I have told you as here. So next is writing skills. If you meet the 6 ducklings, what would you tell them? Write a paragraph using hints given below. अगर आप उन डकलिंग 6 डकलिंग से मिलें जो अगली डकलिंग का मजाक उड़ाते हैं, तो आप उन्हें क्या बताना चाहोगे, उन्हें क्या अच्छी बात बताना चाहोगे. So we'll write a paragraph using the hints given below. You can use the hints so hints is behaving well, not to bully anyone, helping others, stopping others who bully. Clear? So do and learn. Question number K. Identify and join each picture of the moral story to the message it conveys. So these are the moral stories. You can say, you know there is a thirsty crow, here and tortoise, and union is strength, and greedy dog, and this is a lion and mouse. So unity is strength. The greedy person may lose everything. Where there is a will, there is a way. Slow, ये जो है इससे मैच करती है. Slow and steady wins the race. Here the greedy person may ये unity is strength. A friend is in need is a friend indeed. Clear? Clear students? Sorry students, it will match this with this one, and this will match. Where there is a will, there is a way. It will match with this one. Clear? Life skills and values. Talk to your parents, elders or teachers if anyone hurts you. Class calls you names, teases you, scares you, touches you inappropriately. Clear? So thank you students so much. Must practice these stories and must write the paragraph. Thank you.